Hi. Today's video, this is my first long video, very well. Today's video is going to be an honest review about the college I study in, which is Christ University. A lot of students join. A second. Yeah, a lot of students join every year to this college, and um, I just felt that I should give a review of this college. इसलिए yeah, that is what this video is going to be about. Starting from a basic introduction, because this is my first video, so uh, किसी को पता नहीं होगा कि मैं क्या कर रही हूँ इस कॉलेज में या फिर what is who I am or anything, because I've never introduced myself. Yeah, okay. So hi, I'm Nabya. I'm a postgraduate student in Christ University, Delhi campus, by the way, and I'm doing my post graduation in clinical psychology. So I have written a few things about what I will be discussing in this video about the college. Yeah. So first and foremost thing about this college is that it's very structured, it is very systematic, okay, it is very organized. इनके discipline के मामले में हो, exams के मामले में हो, या फिर whatever it is, they are very structured. They have a way of doing things in their own way, okay. Like, so it might be very overwhelming in the beginning, in the first 2 semesters. For the first 1 year, it might be very hectic. You might tend to lose it. You might be regretting your decision. I did, okay. You might be thinking कि I should just give it up and take a drop here maybe, क्योंकि सबको लगता है, trust me, मेरे बैच में इतने सारे लोगों को ऐसा लगता था एक पॉइंट पे कि भाई why are we going through all of this, because in masters program especially it is very much more hectic. Masters तो generally hectic होता ही है, उसके ऊपर से उनके assignments थोड़े होते हैं, लेकिन the better part is that it trains you for the future, okay. So you will be able to deal things in a better way in the future, like in the actual field में जब तुम आओगे तो you might be able to face things in a better way. You might not give it away easily, like give it up, और तुम्हें थोड़ा सा और वो क्या कहते हैं उसको, रेजिलियंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है. तो that was the word I was looking for. Anyways, so they have very strict, okay. Then strict as in कुछ चीज़ों के लेकर स्पेशली वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज दे आर डिसिप्लिन. दे हैव अ फ्यू थिंग्स विच दे कंसिडर एज देयर कोर, ये like using phone, okay, using phone in class, wearing casual things. I mean, जैसे कि यूनिफॉर्म के ड्रेस कोड के लिए ड्रेस कोड को लेकर दे आर वेरी particular. If you wear jeans on a formal day, that's not allowed. Jeans तो वैसे भी you're not allowed to wear, like other than Saturday. So it is you might be sent back home to change and come. But then yeah, the better thing is that you do not wear itself. Okay, so do not take your risk वाला ये thing, अपने intrusive thoughts को जीतने मत देना कि मैं तो पहन के जाऊँगी या फिर मैं तो पहन के जाऊँगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, सोच के नहीं, that's not gonna work. You cannot wear sports shoes. And there are other things as well. So this was a basic introduction. So give an understanding ki they are very organized and structured is the major part of it. So yeah, coming to the next part. So there are a few things which are the which define Christ University perfectly. So you need to go by it. You don't have any option. If you have joined the university, if you are going to continue, if you have taken admission and you're not going to, you don't have this thing with you that drop le lo ya fir ye wala thing. You have to understand that you cannot do a few things. You have to restrain yourself from doing a few things, like using mobile phone in class. You might get punishments, okay. They will take your phone. The faculties might take your phone. They'll ask you to meet the HOD. They'll ask you to pay a fine up to 1,000 or 1,500 or 2,000 as well. Okay, your parents might be called that your daughter or son was using phone in class, and all of that things happen. Okay, so the better part is that, not the better part, but then the better thing to do is that you do not use your mobile phone in class. That's it. Not even for looking time, because कभी कभार time देखने के लिए भी उनको, they don't know what you are doing, right? You cannot just say that मैं तो time देख रही थी, because they not trust you. And you can lie also. So इसलिए मत करो, यही अच्छा है ज़्यादा. And about attendance,
attendance, you have to strictly maintain 85% of attendance before exams. Even if it is 84.96, 84.98, तुम्हें नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम लिखने को. You have to make sure your attendance is 85 and above. Keep just थोड़ा सा आगे रखो, just in case you need leave for some purpose. किसी की शादी आ गई या फिर छुट्टी लेना है या फिर बीमार पड़ गए या फिर कुछ भी है, कीप थोड़ा सा आगे, ताकि जब तुम छुट्टी लोगे तब भी 85 से नीचे ना जाए. एंड ये सब बकवास मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन मेरा पिछले सेम में 85.04 था अटेंडेंस. बट देन थर्ड थिंग ये है कि तुम्हें टाइमिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा. इफ़ योर क्लास इज़ एट 8 o'clock, प्लीज़ ट्राई टू एंटर द क्लास मैक्सिमम बिफोर 8:05, क्योंकि उससे ज़्यादा तो तुम्हें नहीं मिलने वाली है. एंड मोस्ट टीचर्स डू अलाउ 8 to 5 से 8:10 तक भी, लेकिन फिर देर आर वेरी नॉट मोस्ट टीचर्स, वेरी फ्यू टीचर्स अलाउ. मोस्ट टीचर्स टेंड टू गेट अटेंडेंस एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट इज़ द मैनेजमेंट का इन्होंने बोल रखा है, तो दे कैन नॉट हेल्प यू in any way. So the better thing to do is, again, be on time. Right? Because I have lost my attendance multiple times because of being late. And they give you an option. If you want to go, you can go, because I'm not giving you attendance, so you can go. But then that is very disrespectful. So yeah, please do not go. I have experience. Please trust me on this. Okay, there are a few things which experienced people tell you, and you need to follow it. Yeah, that's it. Okay, so बहुत बार मैं लेट हुई हूँ क्लास में, एंड आई हैव लॉस्ट माई अटेंडेंस मल्टीपल टाइम्स. फर्स्ट आवर्स में होता है, ठीक है. तुम कुछ भी नहीं बोल सकते, ट्रैफिक था, ये था, वो था करके नहीं बोल सकते, क्योंकि बाकी बच्चे अगर टाइम पर, तो तुम कैसे अकेले लेट हो गए ऐसे करके पूछेंगे. तो बेटर यही रहेगा कि जल्दी पहुँचो, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए भी तो कम प्रॉब्लमेटिक रहे, उनके लिए भी कम प्रॉब्लमेटिक रहे, और तुम्हारी अटेंडेंस भी ना जाए. सो या, दैट इज़ अबाउट द टाइमिंग्स. Yeah, these are the 4 major things: uniform, dress code, टाइमिंग्स, अटेंडेंस एंड मोबाइल फ़ोन. ये 4 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो फिर बाकी तुम्हारा हो जाएगा. क्लास में खाना मना है वैसे, एंड यू कैन नॉट ईट एनीथिंग इन क्लास. द सिक्योरिटी दीदी माइट, आई मीन कुछ होता नहीं है खास, लेकिन फिर वो बोलेंगे तुमको मत खाओ करके, बस दैट्स इट. सो मत किया करो ऐसी चीज़ें जिससे तुम्हें टोकने का वो मौका किसी को मिल पाए. या, सो दैट्स अबाउट द मेजर पार्ट्स. ओके, कमिंग टू द प्रोग्राम्स wala thing. So most of all the programs are very comprehensive. Okay, like masters ho, bachelors ho, they are very structured in such a way that you get a hands-on experience on everything. And मैंने अपने LinkedIn पे recently एक post डाला था. And first of all, this video majorly why I am making is क्योंकि मेरे को LinkedIn में काफ़ी सारे messages आए थे कि can you give review about how Christ University is and what are the things that are that they think, consider and all of that things. So इस वजह से मैं ये वीडियो डाल रही हूँ. ओके, प्रोग्राम्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, एंड तुम्हें क्या कहते हैं वो लोग रियल वर्ल्ड के लिए रेडी कर देते हैं बेसिकली, क्योंकि इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ग्रेजुअली कि तुम एक्चुअली यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द रियल वर्ल्ड स्ट्रगल्स. ओके, so they have CIAs, continuous internal assessments, they have midterms. CIAs एक नहीं, 2 नहीं, 3 होते हैं अंडर ग्रेजुएशन में, and for masters I think it is 2 because I have 2 and I do not have midterms. I have CIA 1, CIA 2 and then end semester, but bachelors में I think 3 CIAs and the second CIA is midterms. So yeah, technically 2 CIAs but 1 midterm exam. We do not have midterm exam and 1 end semester exam. So passing in all the exams is important. Okay, like separately passing in all the exams is very important for determining your overall CGPA. So keep that in mind. And yeah, that's pretty much it about courses. Coming to faculty, I am from psychology department, so what I think is other than that also क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि वो लोग हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी को ही रखते हैं जनरली. ऑल द मोस्ट ऑफ द फैकल्टी इज़ क्या कहते हैं PhD स्कॉलर्स या नो सॉरी डॉक्टरेट वाले हैं. एंड या, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, तो यू कैन make the most use out of it. You can ask your doubts, you can talk to them freely about anything career के related या फिर कुछ भी हो वो सब चीज़ें. टीचर्स आर जनरली वेरी
open-minded, approachable and everything, because I mean I'm talking about my department particularly, okay? So yeah, and psychology का I think सबसे बड़ा department है Christ में, तो इस वजह से I can assure you that part. Okay, one last thing about placements. Placements का uh, okay, for commerce, law and management, I can tell कि placement cell is very active and you can have expectations कि अच्छी जगह तुम place हो जाओगे. लेकिन for humanities, please do not keep any expectations, because humanities ऐसा एक field है जहाँ पर तुम्हें हायर एजुकेशन में हायर पोजीशन पे पहुंचना होता है, तभी जब भी तुम्हें अच्छा पोजीशन मिलेगा. तो या बिकॉज हमें तो नहीं मिलने वाला, तो इस वजह से आई एम टेलिंग कि ह्यूमैनिटीज़ को ज़्यादा स्कोप नहीं है. अदर देन दैट, फॉर मैनेजमेंट, लॉ एंड कॉमर्स देर इज़ अ हाई स्कोप फॉर प्लेसमेंट. सो या, यू कैन ट्रस्ट देम ऑन दैट. That's about it. Coming to my personal experience here, so my personal experience has been an emotional roller coaster, I would say. There is a lot of things that happened. I met a lot of new people, and it is a completely whole new world for me, because I did my undergraduation in Bangalore. So coming here was a little difficult for me, because people are different, cultures are different, everything is different, right? So getting along with them and gradually being okay and opening up with everyone took time, because I'm generally that kind of a person, but then it's not gonna be the same for everyone. But then yeah, coming to this is just my experience here, right? So and then yeah, one most important thing is that they give you a lot of platforms to एक्सप्लोर, कि तुम्हें करना पड़ेगा कुछ कुछ चीज़ें, तो यू हैव टू डू, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन हु यूज टू डू PPT प्रेजेंटेशंस ऐसे इतना आराम से. ओके, आई यूज टू बी टेरिफाइड, इतना टेरिफाइड दैट आई यूज टू बी एब्सेंट इन माई UG डेज. रेयरली गॉट प्रेजेंटेशंस इन माई अंडर ग्रेजुएशन, बट देन जब भी मिलता था तो भी मैं आई वुड टेक अ पार्ट, PPT बनाने का पार्ट ले लिया, ताकि मेरे को और कुछ करना ना पड़े, बोलना ना पड़े, क्योंकि मेरे को डर लगता था. ठीक है, एंड कमिंग हियर it changed me completely, because I've had the क्या कहते हैं times where I really need to be doing this, because मेरा marks उस पर depend करता है, तो मेरे को करना पड़ेगा. there is no other option, no one is going to do it for me. I cannot do the presentation because it's just my presentation, right? ये group वाला भी नहीं था, खुद करना पड़ता है सब कुछ. तो gradually I got better with it. I have posted about it on my LinkedIn also. I'll share a screenshot इससे side में. So yeah, दैट्स अबाउट इट. सो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे तुम्हें जहाँ पर तुम्हें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी डिस्पाइट योर फियर, एंड एक्चुअली इट विल हेल्प यू ओवरकम दैट फियर, एंड इट्स अ गुड पार्ट, राइट? कि समथिंग यू आर स्केयर्ड ऑफ, यू दे गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम दैट, राइट? सो yeah, so that's it pretty much about Christ University. So if you have anything else to ask, please ask in the comments.